See, fasting is such a beautiful technique, then we can use it for reversing many diseases, including cancers, autoimmune disease, and many others. So what happens is, though हम सब ने सीखा, we all know that the root cause of all of the human diseases, mostly 95% human diseases, are directly or indirectly related to metabolic syndrome. We have already discussed about it in detail, but for brief introduction, I am presenting again here. These 4-5 criteria like obesity, high blood pressure, high blood glucose and insulin resistance, high lipid profile or dyslipidemia जिसको आप बोलते हो, cholesterol increase, triglycerides level, and a large waist size, of course obesity, and a low HDL means good cholesterol की कमी होना. All these can cause various human diseases, right from cancers, autoimmune diseases, heart attack, stroke, and many others. होता क्या, metabolic syndrome cause mutations in our DNA, especially in the mitochondria and the cell nucleus. These mutations keep on collecting and cause DNA damage, and that's where our mitochondria get damaged and we get into aging, as well as we get various other diseases. So if we somehow maintain this balance and repair our mitochondrial damage or mutations along with on a day-to-day basis, then we can even slow down and reverse the process of aging itself, and of course many diseases and cancers also. So these are the basic summary how our mitochondria gets damaged. So excessive sugar intake, processed food जो हम लोग खाते हैं आजकल, sedentary lifestyle, environmental factors, various toxins which I've already discussed in previous month और जो हमने sessions पहले कर चुके हैं, and stress and sleep deprivation, hyperglycemia and inflammation. This is very important. We all get your blood test done ना, CRP आप सबका बड़ा आया है, insulin resistance है, insulin भी बढ़ी हुई है, homocysteine increase है, then nutrient deficiencies and genetic predisposition and aging. So all these collectively cause mitochondrial damage. Now how to stop it or reverse it? Mitochondrial damage को reverse करना possible है, of course. And how can you do this? By undoing the things which is creating this nuisance of the mutations in your mitochondria. कैसे इसको undo करना है? See, cancer के लिए Warburg effect, again the sugar thing. So all human diseases, if you see, are the complications of this metabolic syndrome. चाहे आप diabetes का नाम ले लो, hypertension, insulin resistance, and most of these are interdependent to each other. They are not separate diseases entity. So these are a gist of summary of what metabolic syndrome can do. It can cause various kind of inflammation, mutations, and बहुत सारे inflammatory factors keep on rising in our blood stream and then cause gradual damage to our blood cells and other body cells, and फिर वो mutations आके we get various diseases. These are the causes of insulin resistance is the main primary cause of mitochondrial damage and also metabolic syndrome, and these are the 7 causes. That is the beauty of प्रोत्साहन program कि ये collectively holistically इन सब पे काम एक साथ करता है. By knowingly or unknowing आप जो भी चीजें फॉलो कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, डाइट एंड all of those things are focused on reversing all these 7 causes. So obesity सबसे पहले is the mother of all diseases. So and it is the second most important preventable cause other than smoking for all cancers. So हम इस तरह की body type को अब बहुत commonly हमारे समाज में देखने लग गए हैं. We keep seeing these body types and we have to not accept it but reverse it. So how to do it easily we'll discuss. Also, in addition to various metabolic syndrome complications, obesity also what it does is all the fat cells store various xenoestrogen and chemicals, harmful chemicals we easily are exposed to our day-to-day life, right from our toothpaste to our mosquito repellents and many other things. We are daily exposed to it, and there all these chemicals are basically stored in our fat cells, and these then gradually give us estrogen signaling and cause various diseases.
So obesity को कम करना is the most important thing we should all be focusing on. Once you get rid of obesity, you get rid of many diseases and prevent various grave complications. Before you start medicine या आपका डायबिटीज या शुगर लेवल्स हाई आते हैं ना HbA1c, उससे 15-20 साल पहले से ही द इंसुलिन स्टार्ट्स राइजिंग. तभी हम लोगों ने आपके जो भी टेस्ट कराए, वी गॉट all of your blood work done before inducting you in the batch, and all that has been, one important factor is insulin, fasting insulin हम आप लोगों की कराई थी. So before you develop diabetes and complication, the insulin start rising at least 10 to 15 years before that, or normally the levels are given in the test reports you see is 22, but for us we consider 10 to be too much. So it should always be less than 10. If you are fit and you regularly exercise, you take care of your diet, then the insulin level should always be, if you are athletic and you are fit enough to, so the insulin level should be between 3 to 5. So 22 का हमें वेट नहीं करना. We should not wait till the level of 22 for fasting insulin. We should start acting once it crosses above 8. तो हमें वहाँ से रिवर्सल करना है, नहीं तो we will definitely develop diabetes in later part of life or within few months or years, depending on how bad your lifestyle is. This is how we measure insulin resistance. हमने आपका fasting insulin किया, fasting sugar किया in the same blood sample, then we multiply both and divide it by 405. The result for this calculation should always be less than 1.5. The higher it is, the more likely you will develop chronic diseases and diabetes. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, आपकी बॉडी, योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूज ग्लूकोज, तो यू ऑलवेज फील टायर्ड, जैसे मोस्ट डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं. यू ऑलवेज फील लिथार्जिक, एंड ऑफ कोर्स आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, तो यू फील मोर हंग्री, तो यू कीप ऑन ईटिंग मोर, एंड देन अगेन ब्लड शुगर राइजेस ड्यू टू एक्सेसिव रिकरेंट फ्रीक्वेंट ईटिंग्स. अब उससे क्या होता है, यू गेट इनटू ए विशियस साइकिल. दिस विशियस साइकिल we have to get rid of. जब तक ये vicious cycle खत्म नहीं होगा, we are not able to reverse our diseases. Insulin resistance directly or indirectly cause a lot of deaths every year. More than, it's expected more than 3 billion deaths every year. And unfortunately, if you Google it, you will find there is no treatment for this, but you can always reverse it. And here the Protsan program is focused definitely specifically on reversing this insulin resistance. हम लोग क्लिनिक पे हमेशा देखते हैं, पीपल कीप ऑन कमिंग एंड टेलिंग हम ये डिवाइड ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, फैटी लिवर की ले रहे हैं, बीपी की ले रहे हैं, ये कंट्रोल में. ये जो कंट्रोल है सिंड्रोम है ना, दैट इज द मेन कल्प्रिट कि आज हमारे समाज में दैट इंडिया हैज़ मोर देन 60 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स नाउ, बिकॉज वी कीप टेकिंग मेडिसिन एक्सेप्टेड कि भाई दिस इज द ओनली वे आउट. So before, and also these medicines not only gives you various complications due to their own side effects, also they are only symptom focused and आप complacent हो जाते हो इनको लेके, and you the insulin resistance keep on acting in your body and giving damage to your various organs like liver, kidneys and other. And that is where even in spite of taking regular medication, diabetics develop stroke, diabetics develop heart attacks, and diabetics develop kidney failures also, and neuromuscular disorder तो है ही है means. तो that is where the medications, the protocols should focus on decreasing insulin resistance and not just on blood sugar levels. Also this insulin resistance is the main culprit for causing all complications which we get in spite of taking all the medicines and insulin. And also these medicines are mostly contaminated with various carcinogens as per WHO report. And not just कि एक तो डायबिटीज आपको कैंसर दे रहा है, and the medications also are giving you cancer. तो insulin resistance plus their medication both are giving you various type of diseases. Now this is how your body proceeds towards diabetes and obesity. जब आप obese होते हैं, initially आपका insulin और sugar levels both are low जब आप fit होते हैं. As you grow more unfit, you grow more fat, you tend to take on more sugar, आप lifestyle खराब करते हो, आपका insulin बढ़ने लगता है. That is where I told you ना कि 10 is the limit, it should. तब भी आपका sugar level ठीक आता रहेगा.
by the time the insulin reaches 20-25, only then your sugar starts rising. तो अगर आप सिर्फ शुगर ठीक है भाई, मेरी तो शुगर हमेशा ठीक आती है, ये सोच के आप you design your various treatment and protocols, then you will tend to develop complication definitely. So what the focus should be, decreasing this red bar. The insulin should decrease, so the sugar levels will definitely by itself will decrease. अब ये हो क्यों रहा है? See, historically if you see human evolution, there will always be a time जब हम feast करते थे, then there will famine also. जैसे आज आप देख रहे हो, for example the tomatoes are so means inflation कितना high हो गया tomato, because of the weather conditions and various means downpour of the rains, you get shortage of the food grains and food items, and that is how human evolution always been there, and there was no cold storage. तो क्या होता था, we keep on feasting, जब हमें खाना ज़्यादा मिलता था हम इंसुलिन बढ़ा लेते थे बार बार खा के, but we also used to follow fasting and famine naturally. तो उस वक्त क्या होता था, इंसुलिन खुद गिर जाता. बट आज के समाज में, आज की डेट में, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी फेमिन्स, वी आर ओनली कीप ऑन फीस्टिंग. इवन हम फास्ट भी रखते हैं तो उसके लिए भी स्पेशली वी प्रिपेयर सो मैनी स्पेशल काइंड ऑफ फूड्स दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस रिलीजियस फास्टिंग. जैसे आपके बहुत सारे यू गेट इनटू वेरियस थिंग्स ऑफ क्या कहते हैं ना, फास्टिंग फूड आ गए ना, फास्ट फूड, जैसे स्पेशली नवरात्रा थालीज एंड अदर थिंग्स आर कमिंग अप नाउडेज. तो आप कभी भी फास्टिंग का सही बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, एंड दैट इज द टॉपिक टुडे using. So historically, as I have told you, when we were hunter gatherer, we used to take 0 to 2 meals, means sometimes we go मतलब we do not get food for many days also. शिकार रोज तो मिलता नहीं था. Similarly till 1970 we used to eat only 2 meals, but nowadays you take 3 meals, then 3 times snacks, teas, etc. And this is the research paper for Cambridge University कि कैसे famine and fasting दोनों का हमने बैलेंस बनाया हुआ था, ब्रेन एवोल्यूशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल कर रहे थे. दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल. अनदर फ्रॉम क्लिनिकल न्यूट्रिशन, अनदर रिसर्च पेपर पब्लिश द अर्ली पार्ट, जो लोग अर्ली पार्ट ऑफ टाइम में फैमिन को एक्सपोज हुए, दे हैव बेटर काइंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. दे डिड ए वेरी ह्यूज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इन द ग्रेट फैमिन ऑफ चाइना इन 1962. दैट इज द स्टडी हियर पब्लिश्ड. So insulin is a fat storing hormone. Just remember this. The higher the insulin levels, the more you trigger your insulin, the fatter you become. And when you do not eat anything, you empty your pantry. और आपकी pantry क्या है? Your liver. Your liver keep collecting the sugar you eat, the calories you eat in excess of your need. The liver keep on collecting it and changing into glycogen, which is then converted to triglyceride, which causes dyslipidemia to you. यानी तो then the root cause is higher insulin levels. तो जैसे अगर जब आप नहीं खाते, you practice fasting, the insulin level naturally comes down and you start burning fat without even doing a single minute of exercise. So this is the graph showing your meal timings right now. The topmost graph is showing your current scenario. आपने dinner किया, you then just when you wake up, just before that time you tend to have slightly lower insulin level, then again breakfast, lunch, dinner, उसके बीच में snacks. All these red graphs you see, these are the insulin triggering graphs, and यहाँ पे आप fat store कर रहे हैं. Similarly, when you practice intermittent fasting 16 to 18 hours window, you tend to burn fat for a longer period of time. तो यहाँ आप एक balance create कर लेते हो and you do not gain much fat and weight. And similarly, when you do longer fastings like 24 to 28 hours, which I practice on every fortnight on Ekadashi, I keep a water only fast from 24 to 36 hours. Here you keep on burning fat for a very long time and also trigger autophagy. Autophagy we will discuss later in a while. So we are actually feasting for a famine which never happens. तो इंसुलिन हमारा क्रॉनिकली हाई रह रहा है, एंड दैट इज वेयर द डायबिटिक एपिडेमिक कम्स इन, एंड देन देयर कॉम्प्लिकेशंस. तो एक बहुत बड़ा झूठ आपको ये ब्रेकफास्ट लॉबी ने किया है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, कहते हैं ना कैलॉग्स वाले. तो दैट इज वेयर यू टेंड टू गेट थिंग्स रॉन्ग.
and we are not using the Vedic Gyan which we get, Vedic Vigyan, I always say Vedic science, we should practice fasting and should skip breakfast some days, at maybe longer, depending on your need and your body type and your disease condition. You can do it for a longer periods of time. And this is your regular breakfast loaded with insulin spiking things. All these spike your insulin and seemingly they are called healthy breakfast. तो जैसे ही वो seemingly healthy breakfast आपकी spike करता है insulin, you start storing fat from the beginning of your day. And this is the gist of the summary of all this we discussed. When you eat something, the insulin triggers, this glucose then gets into the liver, converted into glycogen, which we discussed. This glycogen, when in excess, when the liver tends to overdo its capacity, then it sends this glycogen, converts into triglyceride, gets into your blood and increase your cholesterol level. Similarly, this glucose is essential for our various body functioning and muscles to be used, and if it is not used, it goes to fat cells and you tend to become fat. That is where I told you that insulin is a fat storing hormone. But when you skip your breakfast or you do longer times of fasting, the body needs glucose, so you stop this inlet here, so there is no glucose entering from your intestine. Now what happens is body needs some glucose for its body functioning. So what it does is the pancreas secretes another hormone called glucagon, which is a fat burning hormone, like exactly opposite to insulin. What it do is the stored liver glycogen, which it was storing during the times of feasting, now it has to serve to the body during the famines. So what it does is this glucagon converts this glycogen again to glucose, and this is called gluconeogenesis, this whole scientific term for this. And then this glucose is being used up by our body, and in this way fasting burns your fat, also decrease your insulin resistance, because the insulin decreases when the glucagon increases. Naturally you will decrease, automatically your insulin resistance is decreased. And that is where I always say, do not spike your insulin repeatedly during a day by drinking your regular teas. You can take a sugar free, milk free tea which has 0 calories, which will not spike your insulin. This even you can use during the time you are fasting. And that is where your daily post dinner ice cream also comes in. It again gives you such a insulin spike, yet during the night even which you had a slight window of insulin, decreasing your insulin and burning your fat, that is also gone by the post meal sweets or the desserts you take. And I am coming back to the graph again. So we need to focus on insulin levels more than the sugar levels. So always focus to decrease your insulin levels by whichever protocol you follow. We follow 4 basic protocols which we told you. We have to manage our stress response, exercise, then diet, which we are discussing, using fasting, and also the environmental factors, various toxins which you are exposed to, like your hair color. So this is the insulin resistance. आप जो है, the insulin is the key which opens up the channel where glucose enters the cell. So if the insulin, in spite of excessive insulin, if the receptor for insulin is decreased in number or it changes its shape in a way that insulin is not able to attach to this receptor, then this channel will not open, and your glucose, your sugars will keep on revolving, staying in your blood, and then which we test by blood test, and we see various अपना insulin level के साथ साथ हमारा sugar levels भी बढ़ने लगता है. See, this is how when you grow fat, you tend to store more fat. The shape of your receptor changes, and now the same insulin molecule is not able to attach to this receptor, and so the glucose channel will not open. Again, the receptor decreased by sedentary lifestyle. When you do not exercise, the number of receptors are decreased because body has to spend energy and resources to maintain these receptors. That is why, in spite of injecting high doses of insulin, you do not get decreased sugar levels. ऐसा बहुत लोगों में देखा गया है. And but ये एक myth है कि diabetes is genetic disease. It is not any genetic disease. The thing is, diabetes never runs in the family. The problem actually is nobody runs in the family.
the whole family is following a wrong method of eating, wrong lifestyle, not doing exercise, and that is why everybody in the family is growing obese or getting diabetes. And that is the ICMR study recently showed that more than 60 crore people in India are already insulin resistant. Mainly if you see, that is the 90% of adult population. But here comes the field of epigenetics, which I always see. You can change your future, you can switch off the genes which are causing you diseases by changing your daily habits. Okay, so your habits tends to not only change your future and you give you a disease free future, but also your kids also. So how to decrease this? First of all, decrease your poor eating habits, which you take frequent meals, frequent sugar, frequent fructose जो आजकल कौन सिरप है, various beverages you keep on taking, and जो processed food you take, and of course frequent meals, where we are today. जो आज का टॉपिक है, not taking frequent meals, using intermittent fasting and long term fasting as a therapeutic method. So our metabolism should be maintained in a way that it should burn fat, not store fat. So and इसका एक नेचुरल बड़ा सिंपल तरीका है, बाय प्रैक्टिसिंग फास्टिंग. तभी आप देखोगे सभी धर्मों में, विच एवर रिलीजन यू टेक, नेम्स डिफरेंट है, ऑल द रिलीजियंस गिव ए वेरी इंपॉर्टेंट preference to the method of fasting, especially Sanatan Dharma, Jainism, Christianity also, Islam has its own roza system, and Judaism also. Fasting क्या करती है बॉडी में? The science of fasting is, number one, it decreases insulin resistance, as we have already seen कि जब आप फास्ट करते हो ग्लूकोगन बढ़ता है, इंसुलिन कम होता है. So the insulin resistance is natural decrease without doing anything on its own. Of course, when you do not take anything, the calorie count will definitely decrease by itself. So the calorie stored decrease, and the liver is using its stored fat to convert into glucose and decreasing your calorie intake. Third is, when you longer time fasting, the process of autophagy is triggered. Fourth will be the process of ketosis, which is a naturally fat burning scientific process, and your growth hormone increases, which can reverse even natural aging process. We will elaborate all these pointers gradually. See, महर्षि वाग्भट एंड हमारे वेदों में तो पहले से ही लिखा है कि तो जो फास्टिंग को हम रीपैकेज करके आज बेच रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से, दिस हैज बीन ऑलरेडी रिटन इन आवर वेदास more than 3,000 years back. So we are not doing anything new, we are just simply following the Vedic wisdom here. That is where the whole Protsan program is designed in a way with taking modern medical research, not just the medical curriculum, the real medical research, practical, all the experience we have for 15 years from our clinics in treating patients, and also all these Vedic Gyan has been gelled in a way कि it has become a very holistic program to reverse many diseases. So fasting में क्या हुआ था? डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग, आई टोल्ड यू ना वॉरबर्ग इफेक्ट. तो डॉक्टर वॉरबर्ग को इनको 1924 में he got a Nobel Prize for demonstrating that the cancer cells love sugar 20 to 30 times more than your normal body cells, and this is the basis of our the ACE diagnostic technique for cancer called PET scan, where we inject a radioisotope glucose in your body and we take up scans. So the cancer cells take more glucose, more radioactive glucose, and it comes lightening up in the PET scan, and we can see. Also, we can measure the aggressiveness of that cancer, the spread of that cancer, by the term called sugar uptake value. When you see a PET scan, it will be written SUV. The higher it is, the more aggressive the cancer will be. The lower it is, less than 5, the chances of cancers are lesser. See how you keep on taking sugar daily, and the more you love sugar, आपसे भी ज़्यादा sugar आपके cancer cells को पसंद है. And we all develop cancer cells daily, but our body neutralizes them up to a certain extent. But जब ये balance खराब हो जाता है, then the cancer takes a
specific place and is diagnosed as a local disease. But that is where we see cancer is a metabolic disease, not just a local disease. तो आपको उसके पीछे का मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पहले ठीक करना है बिफोर यू स्टार्ट ट्रीटिंग और थिंक ऑफ ट्रीटिंग कैंसर एज ए लोकल डिजीज. So first treat the metabolic syndrome, the real cause of cancer producing cells, and then you treat the local disease. That is where actual protocol should be, but it is the other way around. Most of the cancer protocols right now are treating cancer as a local disease. So when you fast, you naturally lose fat, and this insulin receptor now comes back to its original shape, and the insulin receptor now get easily attached to the insulin, and you will see the fat will be losing and your insulin resistance is decreasing, and your sugar levels naturally come down. So that is where fasting comes in decreasing insulin resistance. Now the autophagy, which we said, Dr. Yoshinori Ko, he got a Nobel Prize in 2016 by demonstrating the process called autophagy. What is autophagy? Auto means self, phagy means eating. So self-eating, the process of self-eating. I always say na, human body, the human vital force is such a beautiful self-healing ability, has self-healing abilities, but we do not allow it to heal our cells or heal our diseases by frequent eating. So when you do not eat for longer period of time, the process of autophagy comes in. So the damaged mitochondria are eaten up by the body because the body has to use these proteins, the bad proteins, as the source of energy. When you fast for longer periods, first 12 to 14 hours, the sugar is gone. Your glucose levels are being used up already. Then the body starts a process called ketosis. It starts burning the fat as a source of energy, which again, the fat is also being used. But when you cross the time period of around 18 to 20 hours and longer you fast, then the body start using these bad cells, these reactive oxidative species, these mutated aged mitochondria as a source of energy. And when this protein is used for energy, these bad cells are broken down into various raw materials or the building blocks, which we call fatty acids and amino acids. And then this raw material is then again used to renew these cells and regeneration of the new mitochondria. That is where, and that is why longer fasting is such an anti-aging technique, that it eats away all the bad cells and old cells on its own. And that is where autophagy comes in, and we should use autophagy if you want to fight cancers and autoimmune disease and various other inflammatory disorders. So the longer you fast, the lower the insulin and the higher the autophagy. And again, research papers are there that how mitochondrial function improves with dietary restriction and calorie restricted diets. Ketosis. What happens is, when I just told you, when you cross a time period of 12 to 14 hours, the glucose is being already used up. You reduce carb eating. That is where जब हम fast को तोड़ते हैं, we tend to give you more fat rather than more carbs. So what happens is, body start using fat as a source of energy, and you naturally burn fat. Now this whole process is known as ketosis. You can keep elongating your benefits of fasting by taking your first meal as a high fat low carb meal आफ्टर फास्टिंग. तो ये उतना ही लंबा फायदा रहता है. इवन 24 घंटे आपने फास्ट किया तो उसके बाद भी 36 घंटे तक आपकी बॉडी कीटोसिस चला सकती है, इफ यू टेक right kind of food, right amount of food. And here Dr. Garima comes in for your guidance. And then comes the growth hormone. Growth hormone is the most potent anti-cancer, anti-aging hormones. So how we can benefit from it, how we can increase growth hormone. See, when you exercise rigorously, the body secretes growth hormone. It is secreted by pituitary and hypothalamus. So regular exercise increase an amount of hormone which is 3 to 4 times the normal secretion. ठीक है, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, बहुत रिगरस, बहुत मेहनत की, बट मान लो ड्यू टू सम फिजिकल डिसेबिलिटी या टाइम नहीं आपके पास, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तब इफ यू
do a long term fasting more than 24 hours or so, you tend to increase more than 20 times normal secretion, yani 5 times the normal, 5 times when the growth hormone, when you do regular exercise. See, fasting growth hormone को exercise से भी 5 गुना ज़्यादा बढ़ाता है. See how beneficial long term fasting comes in. ये exercise में आप जितना फ़ायदा उठा रहे हो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हो without even moving a single muscle, just by not eating for 24 hours. This is how important it is. I think you will now appreciate why we incorporate fasting as a basic protocol in our all our Protsan program diets. So this is how, or this growth hormone secretion which is increased is a sustainable increase, not just ki increase and decrease compared to exercise. So fasting is even better than exercise. I'm not saying stop exercising. Exercise is one important protocol which we follow, but if you add fasting to it, you will multiply your benefits exponentially. But that does not mean ki injecting growth hormones like we people do in gyms nowadays to increase their muscle growth will have any benefit. In spite, it is seen that it causes even harm, more harm if you take growth factor, yeah, growth insulin like growth factor, as it has potential risk of giving you diabetes and cancers. So all these are the enlisted benefits of intermittent fasting. You decrease weight, your blood sugar decreases, your brain fog decreases, your inflammation decreases, you fight heart diseases, Alzheimer, Parkinson, autoimmune diseases, cancers का risk कम होता है. You uplift your, या upregulate your immunity. Then you also decrease, or you can call it anti-aging. your longevity increase. एंड जो मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, ऑटोफेगी को इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा रहे हैं. वी आर यूजिंग कीटोसिस एज fat burning, and of course it detox body because the older cells are being rejuvenated to new cells. So that is where fasting should always be present in all the protocols if you want to reverse diseases. अब क्वेश्चन ये होता है, how long you should fast? So the answer is, it depends on your goals, your body type, the disease condition you're fighting, and how bad your insulin resistance is. All these factors come in to give you a correct picture of it. So क्या होता है, the longer you fast, if you want to use autophagy, you have to fast longer. If your focus is decreasing fat and insulin, the shorter fasting will also be equally beneficial. See, if you want to weight loss, the goal is weight loss only, then 16 to 18 hours window of fasting is good enough. You eat whatever you want to eat, 1 or 2 meals in those 6 or 8 hours, and you fast for 16 hours. But the body used to adapt easily to various protocols. So तब क्या करना है, what you do is you sometimes, like once a month or once in 2 months or 3 months, you take a longer type of fasting, like 24 hours or so. My mom practices this and she reversed her diabetes from 7.6 HbA1c level to 6.2 in a matter of 1 year. She practices 16-hour fasting daily, and on religious days she practices 24 hours water only fast. Similarly, if you want to avoid cancer, prevent cancer, and fight neurodegenerative diseases like Alzheimer, Parkinsonism, and various other autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, etc., and arthritis also, in that time you should be doing longer fasting and using autophagy, 24 to 36 hours window. And if your goal is just to maintain, you have a good insulin level, you are good at, like I have very good physique, my insulin level comes to 3, I am an athlete, so then you just practice once in a while 24 hours or 16 hours just to maintain your this thing, and once in a while, so the body does not adapt, a few longer juice fast you can have, yeah, fat only fast you can have. We will discuss how you can elongate the time of fasting in a while. So fasting is not difficult at all. जो आप लोग समझते हैं fasting difficult. See, most of the time अगर 16 hours का रखना है तो most of the time will be spent your 8 to 10 hours you sleep, and you just have to take an early dinner and a late breakfast. That's it.
So this can easily be done provided you have that mindset and you appreciate and know the benefits and science behind fasting, and that is the sole purpose of the session today. So again the list, just to summarize you कितना benefit है, and इतने benefits होने के बाद if you see so many benefits of fasting, why not to practice the simple technique which takes up nothing, free of cost. Various popular intermittent fasting schedules we are sharing now. One is 16-8 method, कि you eat whatever you want to eat for 8 hours, of course healthy diet, and Dr. Garima will plan for you, and in the 16-hour window you keep a fast. Eat, stop, eat, this 24 hours. I practice this every fortnight, every Ekadashi. I do not eat anything for 24 to 36 hours, and then I start eating regularly. For breaking my fast, I take a high fat meal, which I will show in a while. Similarly, 5 to diet, it is practiced 2 times a week, means you decrease the calorie intake to 1/4 of your daily need, that is for 5 to 400. You practice this twice a week, and on other 5 days you take regular meals. Again 18 to 200 calories, 18 to 2000 calories a day. Then alternate day fasting, if you want to lose fat very fast, you want to reverse diabetes in a matter of less time, you have less time, say कईयों का function होता है, you are preparing for your marriages and you want to drastically lose weight, and then you can practice this 24-hour fast every alternate day. It also improves your cardiovascular health. And 1 meal a day plan, this is very difficult. This only in extreme cases where you tend to have very quick weight loss, only then you practice this. So अब क्वेश्चन उठता है हंगर क्रेविंग्स को कैसे रोकें. Of course you have hungers and cravings. So if your normal diet have more carbs, you take more carbs and you have no sustainable fat in your diet, that is where balanced diet should be there. Carbs, good plant-based fats, and then some amount of plant-based proteins. If you keep it in your regular meals also, regular days where you are not fasting, then your insulin spikes will decrease and you feel lesser hunger cravings. So sugar, wheat and refined carb you should decrease your daily intake, so you will not have larger spikes of insulin, and the variations of insulin levels is not there, and you will not feel hunger and cravings for a longer period of time. What we can do to elongate fasting, मान लो आप 16 घंटे तक फास्ट आराम से कर लेते हो, बट उसके बाद आपको हंगर क्रेविंग्स होती है, and you want to elongate that time to 20 hours or say 24 hours. So you can use a bullet coffee because it's a high fat coffee, black coffee with some coconut oil or coconut cream you can use to elongate that. This will be quite filling, won't be very high in calories from carbs. The calories here comes from fat, and the ketosis which we have already triggered keep on elongating, keep on continuing. Similarly, avocado, again healthy fat and nutrient value is very high, and a lot of minerals which you lose during fasting. One or more thing, when you are fasting, do take care of your hydration. Increase your hydration more than usual. Similarly, you can use coconut cream, again a high fat diet which will continue the process of ketosis which you triggered by using fasting, and a lot of leafy greens, cabbages which have very high insoluble fiber and very low carb, so they are quite filling. So आप ये खा के you can easily elongate 2 to 3 4 5 hours. Your fasting can easily increase to that the time period. This is my usual meal which I take during my Ekadashi fast to break the fast as a dinner. See, most of the things will be high fat and low carb. So I, even during sleep after this meal, for the next, till the time I take my first meal next day, the process of ketosis continues, and I benefit more from my 24 hours fast too, and I elongate the benefit to maybe 36 or 40 hours by using this meal. अगर इस सब के जानने के बाद भी, despite of all the knowledge and this thing which we have given you, the knowledge and the science behind fasting, in spite of this you do not feel कि I can do fasting, then you have to go through Bhagavad Gita, which I take as a scientific book of life. It is about science of life. Sanatan Dharam is all about living a disease-free, harmonious life, living with nature. इसमें साफ साफ लिखा गया है about fasting
कि कठोर व्रत को यूज करके कैसे आप, देखिए आप नॉर्मली भी आप यू आर जस्ट ईटिंग फॉर योर टेस्ट, मीन्स एक इंद्री है वो, टेस्ट इज ए इंद्री, टंग इज एन इंद्री जिसका बोलते हैं ना, इट्स जस्ट ए सेंस, फॉर द टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट यू कीप ऑन ईटिंग। आज प्रोत्साहन प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले आप यही खा रहे थे ना, एंड विद इन लास्ट मंथ during this period you have seen changes, how your mind is behaving with you and you are decreasing your cravings and then eating properly। और हम इंद्रियों को सिर्फ तृप्त करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? why we are here on this earth to fulfill our एक हमारी जो एक नेचुरल हायर कॉलिंग है ना, हायर गोल, हायर पर्पस है। like I am here to practice my medicine and means giving this education which I practice myself to many people so that they can replicate and we can get a disease free India. So that is where we can use this. Also the breathing techniques we already discussed is also mentioned here. If you see how pran and apan, we will have a very elaborate session on kumbhak therapy and all this breathing exercise later in the part of curriculum, I think by week 10. Then more on भगवत गीता, you see, अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कामना रखते हो then you are tend to go into disaster. If you eat just for केवल शरीर निर्वाह के लिए खाते हैं, मतलब you eat because you want to maintain your healthy body which is just an instrument to that higher calling जो आप बोल रहे हो, तो संयमित मन और संयमित बुद्धि आप कर पा रहे हो ना? आप एक महीने के बाद यू आर एबल टू कर्ब योर क्रेविंग्स एंड डिक्रीज योर शुगर इनटेक, इजंट इट? So this is why the whole Prosan program is so holistic in nature and it is so effectively. This is batch 5 and people have reversed so many diseases previous batches. That is why the effect, because it is based on very deep roots of our Vedic wisdom. Similarly ये लिखा है ना कि हम जो लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग वी कीप ऑन ईटिंग फॉर दिस बॉडी, वी टेंड टू आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स या आर व्हाट वी कॉल यू identify our being with our this body only. We are not this body actually, we are the atma inside. When the body dies the atma doesn't, so your cosmic connection comes in and that is where it is written कि हम मोहग्रस्त होकर इस देहधारी जीव को ही शरीर मान लेते हैं और इसी के लिए खाना खाते हैं, तो अपनी इच्छाओं को इस जीव को बद बना देते हैं और फिर इसे हमें डिजीज मिलती है। दैट इज वाई भगवद गीता इज सच ए वंडरफुल book on the science of life actually. So after means going through all this, I hope you will be able to appreciate the benefits of, yes please Dr. Gray. Yes. In brief, I just want to tell you, like, जो process Dr. Jain ने समझाया उसे एक बार brief में आपको बता के, and then I'll tell you what all you can eat and how to get them a maximum out of the intermittent fasting. So see, when we start our fasting period, शुरू के 4 घंटे आपको लगते हैं आपके इंसुलिन लेवल्स को ड्रॉप होने के लिए, जो इंसुलिन सिक्रीट हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द फूड, इन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज रिलीज जो खाने से आया था, इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, एंड देन विद इन 8 आवर्स ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो आपके नॉर्मलाइज हो जाते हैं, एंड देन your process of ketosis start. Basically what is ketosis? जो glycogen liver में stored है, वो जब it starts converting to fat और वो ketone bodies release करता है, which then becomes the main fuel for our body cells, जैसे हमने देखा. So this process of ketosis, हमारे जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हैं, दे कैन ग्लूकोज इनका फ्यूल होता है, एंड कीटोसिस भी आई मीन कीटोन बॉडीज भी इनका फ्यूल होता है. लेकिन जो एबनॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, जो डिजीज्ड बॉडी सेल्स हैं, दे कैन नॉट दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन कीटोन बॉडीज. सो दैट इज व्हाई जो ऑटोफेजी का प्रोसेस डॉक्टर जैन ने समझाया था, वो धीरे धीरे करके स्टार्ट्स कमिंग इनटू प्रोसेस, एंड यू गेट रिड ऑफ द डिजीज्ड बॉडी सेल्स, एंड नॉर्मल हेल्दी सेल्स के लिए हमको खाना भी मिल जाता है फ्रॉम ऑल दैट autophagy that is happening. So like we talked earlier कि कैसे हम intermittent fasting के बाद भी इस कीटोसिस को मेंटेन करें, तो इसके लिए हमें खाने में क्या खाना है. सो 4-5 चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, एंड योर फर्स्ट मील उसी को बनाएंगे, तो दैट वुड बी बेटर. लाइक जैसे हमने हेल्दी फैट्स की बात की, एवोकाडो हुआ, नट बटर हुआ, आपके नट्स एंड सीड्स हुए,
and like coconut and all your oils, avocado, coconut oil, olive oil, इन सबको include करके you can have a good high fat content. साथ में आप थोड़ा सा hello, can you hear me? Please. Hello, Dr. Sapna, is it better now? Yeah, yeah, I can hear you now. I can hear Hello. you. Okay. So yeah, so I was telling like what all do we eat after fasting? So जैसे मैंने बताया, I'll repeat again, the healthy fats, avocado, nut butters, your nuts and seeds, your coconut oil, olive oil, all this you can mix with your fruits and also. And what kind of fruits should we be eating if we are eating fruits on after breaking our fast? It should be low GI, low starch fruits and vegetables like your apples, your pears, and then cruciferous vegetables would be good. Your broccoli, cauliflower, cabbage. Probiotic food becomes really good because what happens when we are fasting, there is less release of digestive enzymes, obviously, because we are not eating anything, and the digestive enzymes are released when in response to food. तो वो जब फास्टिंग होगा तो उनका रिलीज बहुत कम हो जाता है. तो so to encourage the release of the digestive enzymes, probiotic foods are really good because उसमें already those digestive enzymes are already there. Those bacteria are already there. So that is a good way to to make your first meal with all these things. A good protein content throughout your eating window so that then it keeps you long, it keeps you fuller for a longer time. Good fiber intake during your eating window, again, because it can keep you fuller for a longer time. So this is how this is how you don't feel hungry when you are fasting. Other thing is chew your food very well after you have after you have taken your this thing food breaking your fast. Chew your food very well, two three things because of that. You would be able to properly digest your food because वो simplify हो जाएगा. Again, the release of digestive enzymes that I talked about, salivary enzymes जो होते हैं उनका release अच्छा होगा. Secondly, the first meal आप ले रहे हैं fasting के बाद, it should be not a very high carb, a high calorie meal. It should be a smaller calorie meal because like I said, आपको एकदम से digestion को regulate करने के लिए time लगता है. So it has to be a low digestion meal. And then avoid experimenting. Don't try and experiment with new food when you are breaking your fast. So stick to the things that you know your body can easily digest. This is also important. Then the other thing is during fasting, it is very important to stay hydrated, like Dr. James has already told us. And easy digestible food से fast break करना है. During your fasting, do not try and not to go for any heavy exercises, and because that can be further damaging. You try and do easy like slow walks and probably yoga or something, but not too heavy exercises. So these are the certain things that you have to keep in mind. And then again, to reduce hunger pangs, there are certain techniques that we apply. So there are 5 6 methods that we use. Plan ahead. Like when you start your fasting, you have to plan ahead what all you can do during your fasting period. Like जो time आपका hunger pan का होता है, like say for me it's in the evening 7 p.m. So what I'll do is I'll have to make sure if I'm fasting during that period, I'll engage myself in something, you know maybe meeting a friend or maybe calling up somebody and talking, or maybe doing some activity that would keep your mind away from those hunger pangs. And then drink more water, and all the things that we have already talked about. So it's like Dr. Jain said, it's not that difficult as it sounds or it might seem. So once you start practicing it, your body will adapt to it very naturally and very beautifully, and we will be able to get the benefits out of it. And other than that, we both are here to help you in case you face any problem or you know some issues. So yeah. मीन्स वी विल बी प्रैक्टिसिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा मैं तो आई विल अपील की गेट सम डम्बल्स, पेयर ऑफ डम्बल्स टिल 5 kg to 10 kg once, 2 to 5 kg once, so that we can give you a practical demo session and check your movements practically on live session. और ये आपके लिए एक पूरा इट विल बी लाइफ स्टाइल मीन्स लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाली है ये दिस डम्बल्स. मेक श्योर कि, और ये लोगों के मिथ हैं कि ओल्ड एज में आपको डम्बल्स नहीं यूज़ करने, यू शुड डेफिनेटली यूज़. ओके.
Yes, yes, Vinay ji, please go ahead. सर जैसे हम मॉर्निंग में अगर कोकोनट वाटर या बीटरूट जूस लेना चाहें फास्टिंग के बाद, तो वो एक कैसा आइडिया है? Dr. Rima, unmute yourself. हेलो। यस या मैम। आप ले सकते हैं, यू कैन टेक कोकोनट वाटर, यू कैन टेक बीटरूट जूस ऑल्सो, बट कोशिश कीजिए कि खाली बीटरूट जूस या कोकोनट वाटर के साथ आप साथ में कुछ नट्स एंड सीड्स भी ऐड कर लें, ताकि कोकोनट वाटर में तो फिर भी कम कार्ब है, लेकिन बीटरूट जो है थोड़ा हाई शुगर होता है, कार्ब उसमें ज्यादा है, तो साथ में जो ग्लूकोज रिलीज है वो कम हो अगर आप साथ में गुड सोर्स ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स लेंगे, जैसे कि नट्स एंड सीड्स हुआ और ये आप या कितने कोकोनट हुआ। कितने घंटे बाद पूछ रहे हैं, मतलब फास्टिंग के? लाइक दिस हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी फिनिश हो गई और मैं फास्टिंग ओपन कर रहा हूँ तब। आप ले सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप पहली मील सोक्ड नट्स ले लीजिए, या थोड़ा नारियल पानी ओके इज ओके, बट बीट रूट जूस को थोड़ा और डिले करेंगे तो और बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, मैंने पहले ऐसा किया था कि जैसे बीटरूट के बाद जो उसका वो वेस्ट बचता है, उसको बिल्कुल ड्राई करके मैंने रोटी में डाल लिया था हम्म। और उसकी रोटी खाई थी। तो क्या वो एक अच्छा हेल्दी मील है या नहीं? ऑफ कोर्स, बट वही कार्ब हम कह रहे हैं ना, तो इसको हम्म, इसको आप सेकंड मील की तरह रख सकते हैं कुछ और घंटों बाद, एग्जैक्टली। ओके ओके। वो और बेटर अगर हम रहेगा। हाँ, आटे में जैसे सोयाबीन और चना पिसवाते हैं तो वो मल्टीग्रेन आटा बन जाता है, तो क्या उसमें मतलब उससे हमारा इंसुलिन कम स्पाइक होएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है क्या? अगर ग्लूटेन उसमें कम है और जैसे आपने सोया और चना बोला, आपने उसमें बनवाया है जो प्रोटीन को आप प्रोटीन सोर्सेज ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल व्हीट रोटी से उसमें कम होगा। तो फिर भी हम अगर वीट अगर लेना चाहें तो इस तरीके से हम कुछ भी मॉडिफाई करके वीट ले सकते हैं? हाँ, मतलब क्वांटिटी धीरे धीरे कम कीजिए डेफिनेटली। बट अगेन वो डिपेंड करता है, जैसे अगर ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिनको, या न्यूरो डिजनरेटिव, हम वीट बिल्कुल मना करते हम्म, हैं, ओके। डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी, आपकी इंसुलिन लेवल जैसे हम हम्म, चेक करते हैं इंडक्ट करने से पहले। तो इट्स जी। वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, तभी ये प्रोग्राम बनाया गया, और इससे पहले हम फिर टेस्ट करते हैं सारे, कुछ फुल बॉडी चेकअप हम करते हैं और उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। ओके। जैसे कि मेरी मदर कहती हैं, वो अगर जब भी नट्स एंड सीड्स लेती है तो उनका बीपी स्पाइक शूट अप हो जाता है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट नट्स एंड सीड्स जो है दे आर वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, क्योंकि एचडीएल जो जिसकी बात की थी, लो एचडीएल, जो आई मीन हाई डेंसिटी एचडीएल, जो गुड एचडीएल होता है उसको बढ़ाने में नट्स एंड सीड्स सहायक होते हैं। ये कुछ मिथ्स हैं, तो लोग लोग सोचते हैं गर्म चीज़ खाने हम्म, से बीपी बढ़ रहा है, या ये है वो, ऐसा कुछ आई डोंट हम्म, थिंक ऐसा है। ओके। और उनको हम अगर भिगा के खाते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता है ना? ऑफ कोर्स। हाँ, डाइजेशन उनकी बेटर होती है, एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, तो आप उनको सोक करके देखिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स अबाउट फास्टिंग, एनी क्वेश्चंस? यस, सुमन जी प्लीज। सुमन जी आप अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, एंड प्लीज गो अहेड। यस प्लीज। हेलो डॉक्टर, मेरा एक ही क्वेश्चन है हाँ जी। कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, मतलब ऑफिस का शेड्यूल वगैरह की वजह से, अगर मैं जैसे 16 to 8 नहीं हो पा रहा, वीक में एक दिन 15 आवर्स हो रहा है, एक 14 हो रहा है, तो इससे कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी ये? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अच्छा ही रहेगा ये तो। बट जैसे आपकी छुट्टी होती है, या आप मतलब अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हो, जैसे मेरा भी शेड्यूल ऐसे ही रहता है काम का, तो मैं 24 आवर्स फोर्टनाइटली करना बेटर समझता हूँ, वो आसान हो जाता है। और क्लिनिक में बिजी रहते हैं तो पता भी नहीं चलता 24 घंटे कहाँ चले गए, तो आई फॉलो दैट। यस। नहीं, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर हमने, जैसे डॉक्टर गरिमा ने बोला था कि आप शुरू में 16 8 नहीं हो सकती तो 14 8 कर लीजिए, हम्म। तो मैंने वैसे ही फॉलो करना शुरू किया, पर मैं कोशिश करती हूँ तो कई बार क्या होता है, किसी दिन 15 हो रही है, किसी दिन 14 हो रही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं 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 होगी? नहीं, नहीं, बेनिफिट कोई मिलता प्रॉब्लम है। नहीं ओके, होगी। हाँ सर। ओके, एंड फिर जैसे उन्होंने सजेस्ट किया, अगर आपको लगता है कि आपको बढ़ाना है पर ऑफिस डेज में आप सिर्फ 14 तक कर पा रहे हैं, तो जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप कोशिश कीजिए कि अपनी फास्टिंग आवर्स थोड़े से और बढ़ा दीजिए। ओके, ओके, है ना? थैंक यू। सो या ओके। ओके, एनीवन एल्स? ये सर एक क्वेरी और थी मेरी। जैसे मेरा ब्रदर है, वो जिम जाता है
और 27 ईयर्स का है, उसका HB1AC 5.4 आता है, तो क्या वो सही है या थोड़ा ज़्यादा है? नहीं ठीक है। अगेन वही बात जैसे मैंने बताई ना, अभी ऐसे बताना मुश्किल है, इंसुलिन नापना बहुत ज़रूरी है। और जिम डाइट्स काफ़ी गलत होती है, और सिर्फ यही नहीं कि HB1AC को ही रेगुलेट किया जाए, जिम की डाइट्स में ज़्यादातर लोगों की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ नहीं अच्छी हो पाती, बिकॉज दे टेक टू मैनी सप्लीमेंट्स और वो सब। अगर वो सब नहीं यूज़ कर रहे हैं, नेचुरली जिम कर रहे हैं और नेचुरल डाइट ले रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। वो बस वे प्रोटीन लेते हैं और उनका जो फास्टिंग शुगर है वो 120 आता है। वही वे हाँ प्रोटीन तो को वो मैं सही नहीं हाई। मानता ना। वे प्रोटीन, दैट इज वेयर वीगन डाइट कम्स इन ना। वे प्रोटीन यही मैंने देखा है बहुत लोगों को, और तभी ये यंग डेथ्स आप देख रहे हो जिम लोगों की होती भी है, क्योंकि वो यस। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। और नेक्स्ट सेशन सिर्फ इसीलिए, जिम वालों को ये भी नहीं पता कि वो जिम कर क्यों रहे एक्चुअली, पता है आपको? यस सर। उनको नहीं पता गोल क्या जिम की एक्सरसाइज के। वो नेक्स्ट सेशन है हमारा, आप तो ओके अभी 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 आपको तो सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए आज इंडक्ट किया है। ओके। तो नेक्स्ट सेशन में हम यही नॉलेजेस को तो बांटना है हमने, यही इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया। जैसे सर आप वीगन है, तो आपको जिम के साथ साथ प्रोटीन इंटेक या प्रोटीन की जितना भी आपको होना चाहिए वो कंप्लीट मिल जाता है आपको? इंसान को इतने प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती सर। पहले ओके तो ये जो सब ये हाई प्रोटीन, लो कार्ब, 1 ग्राम प्रोटीन बॉडी के लिए पर केजी बॉडी वेट बहुत होता है। ओके। मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, आई एम एन अल्ट्रा मैराथनर, ये सही है सर। तो उस हिसाब से मुझे तो कभी कमी, मैं 10 साल से कर रहा हूँ ये सारे काम, 15 ही हो गए अब तो। ओके। और मैं ये सारे वे प्रोटीन वगैरह सब यूज़ कर चुका हूँ, 12-12 अंडे दिन में खा चुका हूँ, 2-2 किलो चिकन भी रोज़ खा चुका हूँ। सब काम मैं कर करा के पिछले 3 साल से वीगन हूँ। और मेरे शायद इस फील्ड में जो कंपैरेटिव रिजल्ट्स मेरी बॉडी पे मैंने देखे हैं, हाँ जी। और जो एक्सपीरियंस मुझे, इतना शायद किसी ने, क्योंकि मैं हाई एल्टीट्यूड्स में भी भाग चुका हूँ, और जिम मेरे घर में खुद अपना है, तो मैं इतना बेनिफिट बता सकता हूँ कि वीगन के सामने अब मतलब इट्स बियॉन्ड आर्ग्यूमेंट। ओके सर। इस पे आर्ग्यूमेंट करना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। ओके सर। ओके सर। और प्रोटीन की जहां तक बात करें तो प्लांट बेस्ड डाइट से भी लाइक ही डॉक्टर जैन जस्ट एक्सप्लेन, जितना प्रोटीन हमको चाहिए, अब जैसे जिम की भी बात करें, देयर आर पीपल इन आवर बैच हु डू जिमिंग एंड दे आर ऑन प्लांट बेस्ड डाइट। हम उससे अब ऑब्वियसली आपको जिमिंग के बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रोटीन आप लें ताकि मसल लॉस ना हो और जो टिश्यू मसल इंजरी या टिश्यू इंजरी जो हुई है वो रिपेयर हो जाए, तो हमें थोड़ा प्रोटीन चाहिए। तो बट वी हैव वेरी गुड प्लांट बेस्ड सोर्सेज फॉर दैट। And there are many studies, Harvard Institute, which is like a जिसको बहुत prestigious institute माना जाता है, they have published a study saying that plant-based diet provides you enough protein and you don't need to go beyond that. ओके So, मैम। और आप अपने ब्रदर को yeah. बोलिए कि एक महीने के लिए, एक जी। महीने के लिए वे प्रोटीन छोड़ दें, ओके। और फिर फास्टिंग शुगर दोबारा कराएं, ओके। तो वो 120 से 100 आ जाएगी। ठीक है सर। ये ट्राई तो कर सकते हैं ना, मुझे पता है जी ये जी जी ये सर। ये जो हार्ड बाउंड हमारे दिमाग में मिथ्स है ना, ये जाते नहीं आसानी से, ओके। लेकिन एटलीस्ट ट्रायल के लिए। ओके सर, श्योर। ओके, तो एनीवन एल्स? यस विश्वजीत जी प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग। मोए। मेरा मेरा सवाल ये था कि जैसे टेंडिंग टुवर्ड्स इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने दोपहर को मुझे मैंने लंच कर लिया, तो शाम को मतलब बहुत ज़्यादा हल्का, शाम को 7 बजे 7:30 बजे के आसपास कुछ भी हल्का खाया था, मतलब इवनिंग स्नैक्स की तरह कभी। उसके बाद मैंने खाना खाया नहीं, और सुबह शायद 9:30 10 बजे के बाद आई टुक सोक्ड आलमंड एंड walnut, right? So can we consider it as a intermittent fasting? ऑफ कोर्स थोड़े से और कम है, बट स्टिल इट इज बेटर देन ईटिंग योर रेगुलर मील्स। ओके, एक्चुअली शाम को ऐसा क्यों हुआ था कि कभी मान लीजिए ऑफिस से निकला और कहीं किसी ने कोई एक पर्टिकुलर शाम को 6:30 बजे के आसपास आपके ग्रुप में रोल खा लिया आपने, लेट्स से टीम के साथ, है ना, समवेयर कैन यू सेड दैट मैंने कुछ ज्यादा खा लिया तो आज रात का खाना ही नहीं खाता, और अगले दिन सुबह 10 बजे जाके डायरेक्ट मैंने शोक डाल मॉर्निंग। सो कभी कभार ऐसा होता है, तो रात का मील उस दिन मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि शाम को इवनिंग को ऐसा कुछ खाया है तो ट्राई टू अवॉइड, बट यू कांट कंट्रोल समटाइम्स, व्हेन यू आर विद योर कलीग्स एंड
See, And that's where that's what I was trying to say. See, that's where we talk about कि हमको आपके lifestyle, आपकी आपके routine के हिसाब से we'll have to fit in. There will be days when you're not, you'll have to eat certain things from outside या आपका control नहीं होगा, you are in such a situation. So and this is actually a good way to make up for what you have eaten, कि ज्यादा खा लिया है या ये कुछ भी ऐसा खाया which is other than your diet. This is a good way to make up कि आपने फिर रात का meal skip किया and you gave your body the benefit of intermittent fasting. तो ताकि जो भी वो खाया है वो उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प हुआ. और सेकेंड इज कि जैसे हम लोग बोलते हैं शुगर फास्टिंग में एक अच्छा है 80 जो है 82 या 70 इज अ गुड गुड जैसे बीपी 120 बाई 80 बोलते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कितना होना चाहिए, मतलब व्हाट इज द पैरामीटर? लेस देन 10 आई कंसीडर. व्हाट पैरामीटर? एंड इफ यू वांट कि बहुत फिट होना चाहते हो तो 5 से कम. अच्छा, जिसका 5 है तो वो खराब नहीं है बोल सकते हैं, राइट? हाँ, बट हाँ वही बात है ना, होलिस्टिक टेस्ट चाहिए. सिर्फ इंसुलिन ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन विटामिन डी, विटामिन B12 जो आपके कराए गए थे, देन थायराइड प्रोफाइल, काफी Right. सारे इट्स ए होलिस्टिक थिंग. सभी ऑर्गन्स का टेस्ट है आपके पास जो हमने किया था, तो ऑल दोस थिंग्स आल्सो शुड कम अंडर. जैसे विनय जी ने अभी बात की, उनके ब्रदर का HB1AC 5.4 आ रहा है, लेकिन फास्टिंग हमेशा 120 आ रहा है. तो अगर उनका इंसुलिन कराया जाएगा तो ज्यादा आएगा in spite of doing gymming. Why did I ask this question? Because sir, I am indirectly a vegan. Because बचपन से मैंने कभी दूध नहीं पिया, अंडा नहीं खाया, I'm a strictly vegetarian. तो ये वाला पैरामीटर मेरे को काफी हेल्प किया. एंड एक टाइम था जब मैं ये सब ना खा के बहुत हेवी जिम मारता, एंड पीपल यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अ वेरी हेवी मीट ईटर. That's the point that what you are saying कि vegan में क्या हो सकता है. But due to the recent last 3-4 years में कुछ काम का प्रेशर और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर की वजह से कुछ शरीर में चेंजेस हुए. So now I am onto all this. So probably that is the best part I can tell you about a vegan. Because I can't say that मैं milk और milk based चीज digest नहीं कर सकता. That's the reason I don't take. And मांस मच्छी वगैरह तो बचपन से खाए नहीं. Anyway, thank you sir. Thanks for your guidance. हाँ जी सौरभ जी. Good morning, मॉर्निंग सर. Dr. Jain. I wanted to ask you, exercise and workout and running and diet तो discipline में जा रहा है, but breathing exercises में discipline तरीके से हो पा रही है. So how to get that into routine ताकि वो भी हो पाए? Maybe बेस्ट टाइम इज कि जब आप उठते हो ना, जस्ट ऑन द वेकअप ट्राई टू इनकॉर्पोरेट फॉर 10 मिनट्स द वाटर ब्रीथिंग. ये सबसे अच्छा टाइम रहता है, ठीक है. एंड यू हैव इवन इफ यू वांट टू वेक अप अ फ्यू मिनट्स अर्लियर, तो वो प्रैक्टिस करो. आपका पूरा दिन का आप देखोगे द डिसीजन मेकिंग, द कामनेस, एवरीथिंग विल चेंज अर्ली मॉर्निंग करने से. और इवन ड्यूरिंग योर वर्कआउट, जैसे आई प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग माई स्विमिंग सेशन, वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि पानी के अंदर आप वैसे भी सांस नहीं ले पाते. यू कैन नॉट चीट ऑन दैट. तो व्हेन आई आस्क माय डॉटर टू डू ए लैप और समथिंग, देन आई प्रैक्टिस माय ब्रीदिंग. और इवन व्हाइल ड्राइविंग यू कैन डू दैट. okay, I need to find my जैसे ट्रैफिक है areas where I have time to incorporate. Yes, that is why. And we will have a detailed session on breathing, don't worry. We will teach you Kumbhak therapy. Kumbhak is a word mentioned in Bhagavad Gita also, and it's a science. So you will have that session separately on week 10, I think. Next will be exercise session. Arrange for few dumbbells first, and the clothing should be such कि you are comfortable in moving on. We will cover both upper and lower body. जो आप जिम में करते हो उसके सारी गलतियां क्लियर की जाएंगी. जो आप जिम में नहीं, आपको नॉलेज की क्यों हम जिम जाते हैं, वो सब हम क्लियर करेंगे. मूवमेंट्स विल बी करेक्टेड, ऑल योर मूवमेंट्स विल बी करेक्टेड. तो आई वुड लाइक कि आप सब लोग विद योर वीडियोस डू पार्टिसिपेट इन दैट सेशन. जो लोग वीडियो अभी सुन, जैसे जो लोग आज नहीं है वो वीडियो भी, तो आई विल रिक्वेस्ट देम ऑल टू बी प्रेजेंट. सर और एक क्वेरी है मेरा, जस्ट वांटेड टू आस्क. कभी कभार कंटिन्यूसली वर्किंग होता है, वो वर्क फ्रॉम होम में हो जाता है, तो सुबह से 9 बजे से बैठे रात को 10 बजे तक, या ऐसा एक लंबा स्ट्रेच होता है मीटिंग के बाद मीटिंग, तो उस समय आपका मूवमेंट कम है, ऐसा नहीं है,
और उस समय मैं जैसे वॉक नहीं कर पाया, कुछ कर नहीं पाया, तो 25 स्क्वाट कर देता हूँ। तो इज इट ओके इन दैट डे? या वेरी वेरी नाइस, मतलब वो ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। And that is, राइट, I call squats as the, मतलब it's the most important exercise, मतलब it's called the best exercise if you consider squats with the bestest results. Also we will teach burpees also. तो सूर्य नमस्कार will Dr. Garima will have a session for whole this. आप बीच में टाइम निकाल के पूरा सूर्य नमस्कार which I consider is a full body exercise वो भी कर सकते हो। एक एडिशनल इनपुट है, इफ सच केस लाइक मी, जैसे और भी मेरे साथ जैसे कुछ लोग रहेंगे जिनका वीकली कभी कभार वर्क फ्रॉम होता है, ऑन दैट डे दे हैव अ लॉन्ग टाइम वर्क ड्यूरेशन एंड विद अ लॉट ऑफ मीटिंग, तो एक जगह से बैठ के उठ ही नहीं सकते, मोस्टली 10 मिनट के लिए उठे, तो उस समय खाने का क्या है, मतलब क्या खाना सही रहेगा, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और 25 स्क्वाट मार रहे हो, और खाना क्या खाओगे फिर? दैट शुड बी काइंड ऑफ सबसे थिंग। सबसे अच्छा है कि ऐसे में आप फास्टिंग प्रैक्टिस करो उस दिन। एक तो आपका ओके, एक तो टाइम बचेगा आपका खाने में, आप अपने काम पे दूसरा आपका पता भी नहीं चलेगा फास्टिंग कहाँ निकल गया, सारा मीटिंग्स में बिजी रह के। ओके, 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 ठीक है, आई विल डू दैट वन। मैं मेरी बात करता हूँ सर। थैंक यू सर। I think that will be all. Anyone else, if you have any queries, please go ahead. Okay. Okay, we will wrap up the session. Any queries, anything you can put up on the group also. And for fasting के लिए ये इस week का challenge है. We will start incorporating fasting at least once or twice a week, as Dr. Garima will suggest for all of you, depending on your reports and all. Okay. So this week on the diet call you will have that week, means fasting will be incorporated now in a regular basis. That is the challenge for this week. All the previous challenges will continue as it is जो कर रहे हैं। Okay, bye for now and have a good day. थैंक यू सर, थैंक यू very much।